Today we start with the try with resource statement. So try with resource statement basically it is used to eliminate the need for lengthy finally log. It always closes the open resource. It allow opening of the multiple resource. It closes the multiple resource in opposite order of opening. The try with resource statement is what? Now, when you are using, you have the multiple finally block, okay, multiple predefined class object, then you have to use a multiple final block. अगर आपके पास मल्टीपल प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट है तो उसको क्लोज करने के लिए आपको मल्टीपल फाइनरी ब्लॉक चाहिए. आप जितना मल्टीपल फाइनरी ब्लॉक आप यूज करोगे आपका प्रोग्राम उतना लेंथी हो जाएगा. तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम यूज करते हैं ट्राई विथ रिसोर्स स्टेटमेंट विच इज यूज फॉर एलिमिनेटिंग द लेंथी फाइनरी ब्लॉक. A class that implement auto closable interface can be used as a resource. If resource must be auto close, its reference must be declared within the try statement with parentheses. Which means what? I will show you how it is actually working. Okay, now if you check, if I use, if I have multiple predefined class object, suppose try if I have 5 predefined class object, then I will define 5 time finally block. Finally. Okay, so in this way you have to define finally. So which makes your program as lengthy. Okay, which is defined to your program lengthy. Suppose see that here only I have defined 2 times. Try, catch, finally. So it is a lengthy approach for defining the program. Now what happened? It's saying that if you have the situation where you have multiple predefined class object without defining this multiple finally, then we have to use a try with resource statement. So finally जैसे कि we have learned that it is used to closing the open resource. Open resource you can consider as it is a predefined class object. So what is that predefined class object? Like if I discuss here, like suppose I have one predefined class object, file. File is a predefined class object. File f equals to new file. So I define here file. Okay, so it is a file object I define. Now for closing that object, I have defined a catch block. Then for closing that object, we have to use f dot close method. So we have to use here af dot close method. Okay. So similar way, if you have another finally block, then another predefined class object, then another finally block you have to use. So that means it makes the program lengthy. Now try with resource statement does what? So it's saying that you don't define here finally block, so which is used for closing the predefined class object. You have to define here try with parentheses.
So this parenthesis you have to define file object. तो यहाँ पर मैंने फाइल ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा, फाइल f इक्वल्स टू न्यू फाइल. So I have to define it. So when you define file class object in the parenthesis, then this object is automatically created and automatically closed. So this f object is automatically created and automatically closed. Okay. तो यहाँ पर आपको फाइनली लिखने की जरूरत नहीं होगा. तो ट्राई विथ रिसोर्स स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं ट्राई विथ रिसोर्स स्टेटमेंट. ट्राई विथ रिसोर्स स्टेटमेंट. इट्स ट्राई विथ रिसोर्स स्टेटमेंट. ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, ओपन होगा और ऑटोमेटिकली क्लोज होगा. ओके. f is the object. Okay, so this object is automatically created and automatically closed. तो इसके लिए आपको यहाँ पर फाइनली ब्लॉक और लिखना नहीं पड़ेगा. तो there is no need to define the final block here. Finally. So try catch, then last statement is what? Finally. तो यहाँ पर फाइनली का और जरूरत नहीं होगा अगर आप यहां पर डिफाइन करोगे. ओके. सो लेट्स डिस्कस मोर अबाउट इट. A class that implement auto closable interface can be used as a resource. Some kind of predefined class object we have, so which is automatically open and which is automatically closed. If a resource must be auto closed, its reference must be declared within the try statement with parenthesis. बहुत सारा ऐसा क्लास होता है जो ऑटोमेटिक उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और ऑटोमेटिक क्लोज होता है. बट इस सिचुएशन में क्या होगा ना, आपको वो ऑटोमेटिक क्लोज होता है और नहीं होता है, बट स्टिल यू हैव टू डिफाइन दैट क्लास ऑब्जेक्ट within the try with parenthesis. Okay, तो try का ब्रैकेट में उसको डिफाइन करना पड़ेगा. Okay, if a resource must be auto close, its reference must be declared within the try with parenthesis statement. कुछ भी रिसोर्स होता है जो ऑटोमेटिकली ओपन होता है, क्लोज होता है, बट स्टिल यू हैव टू डिफाइन इन द ट्राई विथ parenthesis statement. Resource in try with resource statement must be implement java.lang.autoclosable. जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट ट्राई विथ पैरेंथेसिस में डिफाइन करते हो तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है ना, java.lang autoclosable रिसोर्स इसको यूज करता है. और अगर आप कोई भी फाइल इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन करते हो, सो दैट विल डिफाइन इन द java.io.closable इंटरफेस. So java.lang autoclosable interface, which is what it can be implemented. Okay, io.closable is if you are using for the file input and output. So autoclosable interface with close method, like if you are using public interface autoclosable, void close throws exception. अगर आप autoclosable interface यूज करते हो, ऑटोमेटिक इसके अंदर एक मेथड रहता है जो क्लोज मेथड, जो आपका प्रीडिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट है उसको ओपन करता है और उसको क्लोज भी करता है. ओके, so that is the work of this close method. मतलब your resource is automatically open and resource is automatically closed here. Now check that here we use try with resource statement has an exception occurred while creating a autoclosable resource. While you are creating a autoclosable resource, if it is yes, then control jumps to the catch block. मतलब try with parenthesis में अगर कोई भी ऑटोक्लोजेबल रिसोर्स, मतलब कोई भी ऐसा क्लास का ऑब्जेक्ट होता है
जो ऑटोमेटिकली क्लोज होगा अगर यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं, देन हैज द एक्सेप्शन ऑकर्ड व्हाइल क्रिएटिंग ऑटो क्लोजेबल रिसोर्स। जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो अगर उस समय पर आपका एक्सेप्शन आता है, इफ इट इज एस देन कंट्रोल जंप्स टू द कैच ब्लॉक, तो कंट्रोल आपका कैच ब्लॉक में चला जाएगा। हैज एन एक्सेप्शन ऑकर्ड इन द बॉडी ऑफ द ट्राई ब्लॉक। अगर ट्राई ब्लॉक का बॉडी में अगर आपका एक्सेप्शन आता है, देन कंट्रोल इमीडिएटली जंप टू द कैच ब्लॉक, तो कंट्रोल आपका कैच ब्लॉक में चला जाएगा। तो हैज एन एक्सेप्शन ऑकर्ड इन द बॉडी ऑफ द ट्राई ब्लॉक, इफ इट इज येस कंट्रोल जंप्स टू द कैच ब्लॉक। नेक्स्ट इज व्हाट हैज एन एक्सेप्शन ऑकर्ड व्हाइल क्लोजिंग ए रिसोर्स। क्लोजिंग ए रिसोर्स मतलब जो प्रीडिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट होता है, अगर इसको क्लोज करते हो, सो ड्यूरिंग दैट टाइम इफ योर एक्सेप्शन इज अराइजेस देन एक्सेप्शन इज सप्रेस्ड। मतलब जब आप क्लोज कर रहे हो तभी आपका क्या हुआ, मतलब ऑलरेडी यू आर कंप्लीटेड योर वर्क, तो उस समय पर आपको एक्सेप्शन को हैंडल करने की कोई जरूरत नहीं है, तो दैट एक्सेप्शन इज सप्रेस्ड हियर, सो यू कैन से इट इज एक्सेप्शन इज सप्रेस्ड। नाउ व्हाट हैपेंड, did the try block execute without an exception but exception was generated during closing a resource? If it is yes, then control jumps to the catch block. Did the try block execute without an exception? ट्राई ब्लॉक में जो कोडिंग होता है, मतलब ये जो कोडिंग होता है, स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, तो इफ इट इज एग्जीक्यूट विदाउट एन एक्सेप्शन, पहले वो एग्जीक्यूट हो गया, तो एग्जीक्यूट होने के बाद फिर मैं उसको क्लोजिंग करने के लिए कोशिश करूंगा। इफ इट इज एस देन कंट्रोल जंप्स टू द कैच ब्लॉक। ओके, यहां पर कैच ब्लॉक जाएगा। यहां पर क्या होगा ना, मैं काम शुरू नहीं किया लेकिन मैं क्लोज करना चाहता हूं, द एक्सेप्शन इज सप्रेस्ड, मींस यू आर नॉट स्टार्टेड योर वर्क, देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट हैंडलिंग द एक्सेप्शन। मैंने तो काम शुरू नहीं किया, अगर मैं यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडल करूंगा सो इट विल टेक द टाइम। सो इट्स सेइंग दैट इन दैट सिचुएशन डिड द ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट विदाउट एन एक्सेप्शन, एंड ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया विदाउट एन एक्सेप्शन, बट एक्सेप्शन इज जनरेटेड ड्यूरिंग क्लोजिंग ए रिसोर्स, इफ इट इज yes कंट्रोल जंप्स टू द कैच ब्लॉक हियर। Then now check that multicast statement. It reduce the amount of code to be written, avoid catching the generic exception. It separate the type alternative by vertical bar. Okay. I have given an example like now the winter season is going on. If it is raining, then you must have to take the raincoat with you. आपको रेनकोट लेना पड़ेगा। Then you found here, for avoiding that situation, you have the sweater with you and you must keep the raincoat with you. आपको दोनों प्रिकॉशन यहाँ पर लेना पड़ेगा और दोनों एक्सेप्शन हैंडलर लेना पड़ेगा। एक हो गया आपका रेनकोट और एक हो गया आपका जैकेट। So it reduce the amount of code to be written. It avoid catching the generic exception. Okay, and separate the type of alternative by vertical bar. Alternative must have the inheritance relationship, must not have the inheritance relationship. So where there is a situation and you are expecting in the particular lines of code there may be more than one exception will come, then you have to use multiple exception handling. मतलब क्या है, आप जो प्रोग्राम लिख रहे हो, सपोज आपका एक प्रोग्राम हो गया 500 लाइन, 200 से 300 लाइन पर आपको यू आर एक्सपेक्टिंग दैट आपको 200 से 300 लाइन पर आपको एक्सेप्शन आ सकता है, तो you have to put that 200 to 300 line into the try block. आप उसको try block में डाल दो। तो once you put that thing into the try block, then you are expecting that more than one exception will come. So you have to define in the catch block. आप इसको catch block में define करना पड़ेगा। तो when you define in the catch block,
then you have to use multiple catch block. आपको multiple catch statement लिखना पड़ेगा. So just I'm sharing the board. Now see that I define a try block here. I define a try block. So I am expecting that more than one exception will come here. I define here catch, then catch. So it's saying that without defining this multiple catch block, you have to define a single catch block. Multiple catch block के वजह catch block नहीं लिखकर, so you have to define a single catch block. So in the single catch block, you have to define. Then how you have to handle? Suppose I am expecting that in the particular line, there will chance of two exception. One is suppose IO exception, IO exception E, IO exception. Then next is file not found exception. So I am expecting that more than one exception will come. So here I use this vertical bar. I am use this vertical bar. Okay. Now here it shows an error. It's saying that when you define more than one exception, it will not have any kind of parent and child relationship. If you define here IO exception is a parent. So here it is a child. Okay, it is a parent and it is a child. So there must not having any kind of parent or child relationship. मतलब अगर आपका IO है, IO is the parent and file not found is a what child. So ये बोल रहा है अगर आपका IO exception है तो आप और एक हैंडलर डाल सकते हैं उधर. You can have arithmetic exception. Arithmetic exception is. So you have to define arithmetic exception. So it will correct. So when you want to define more than one exception, then you have to ensure you have to define the exception with the vertical bar, but it doesn't have any kind of parent and child relationship. IO exception is different, arithmetic exception is different. Okay, so it is correct now. And when you want to define the multiple exception, अगर आप multiple exception define करते हो, then don't define the generic exception. Generic exception क्या है ना, ये जो IO arithmetic अगर आपको पता नहीं चलता है कहां पर क्या exception आएगा और you are not knowing that, then there is a generic exception is present. So that generic exception you can write here exception E. So this one is called as the generic exception, which is handle all the type of exception. मतलब सारा exception है handle कर सकता है. So don't define the generic exception. You have to define if you are expecting that more than one exception will come, you have to use this vertical bar. आपको vertical bar use करना पड़ेगा. Okay? Okay.
तो use the throws clause to throw one or more exception. Stop executing when exception is generated. The exception is thrown to caller of the method. The throws clause is used to throw one or more exception. It stops the executing when the exception is generated. The exception is thrown to the caller of the method. The throws keyword is used if a method wants to throw a exception. Then throws का काम क्या है? हम तो पढ़े हैं try and catch which is handling the exception. Then what is the need of this throws? Throws keyword is used to just delay the time of exception. Suppose आपका गाड़ी का कुछ चीज खराब हो गया, आप बोलोगे भाई चला लो, हम बाद में उसको चेंज करेंगे. बैटरी खराब हो जाता है, डाउन हो जाता है, आप क्या करते हो? रिमोट में जो मारते हो. तो मे बी इट विल व्हाट हैपन और इट डज इट समटाइम इट वर्क्स. ओके, बाइक का टायर ट्यूब पंक्चर हो जाता है, आपको बोलता है 5 पंक्चर हो गया, आप ट्यूब चेंज करो. तो आप बोलोगे नहीं अभी निकाल दो, हम चले जाते हैं, फिर कल देखते हैं. सो नाउ वी आर नॉट हैविंग एनी मनी. So throws keyword is just like that. मतलब for the particular time period or for the current scenario, if you want to handle that exception, then we use here throws clause. It not handle all the exception. A exception को handle नहीं करता है. It just delay the time of exception. Exception का timing को delay करता है. It stop the executing when the exception is generated. The exception is thrown to the caller of method. So how it is working? Suppose if you want to write a throws clause, suppose you have a function void display then throws IO exception A. Okay, so here I define throws clause is used. The throws clause is used for defining the exception when a method wants to throw exception. So when you define throws clause, that doesn't mean it is handle the exception. It is just delay the time of exception. आपका exception का timing delay करता है. So later you have to handle it. So when you are calling the function in the main method, so you have to handle it. So that is the work of throws clause. The exception declaring in overridden method, it declared the same exception, it declared the fewer exception, it declare more specific exception, don't declare the additional exception, don't declare more generic exception. Exception defined in overridden method. Overridden method means that you have to define in the child class. You have to define in the child class. So here what happened, you have to define the same exception, declare the same exception. मतलब parent class function में आप जो भी exception define किए हो, child class में वही exception आपको define करना पड़ेगा. So that it's saying that declare the same exception, declare the fewer exception. Fewer exception means you don't define the additional exception here. Declare more specific exception. Suppose आपका parent class function में आप define किए हो IO exception, then child class में भी आप वही exception define करोगे. Don't declare the additional exception. Okay, so don't define the additional exception.
डोंट डिक्लेयर मोर जेनरिक एक्सेप्शन। जेनरिक एक्सेप्शन का मतलब क्या है? अगर आपका एक्सेप्शन मतलब कौन सा एक्सेप्शन आपको आएगा अगर आपको पता नहीं है तो डायरेक्टली आप एक्सेप्शन जो कीवर्ड है बेस एक्सेप्शन यू कैन नॉट डिफाइन that. Already we discussed about the throws clause. It delay the exception handling. It can repeatedly throw the exception of the call stack. It must be handled through it and thrown the main method. Okay, ये जो throws keyword है it is not handle the exception, so you have to handle this exception in the main method. आप main method में उसको define करोगे. Custom exception are created when a class extends from the exception class, are not thrown by the standard Java class library. A class may override method or add the new functionality. It captures the information about the problem that has occurred, and the custom exception is defined by using of throw keyword. कुछ एक्सेप्शन ऐसा होता है जो it not belongs to the exception dictionary, but we are giving a rule that you have, if you are passing this value it shows an exception. Recently that you go through the lockdown and shutdown, when government has released for unlock, some of the states are there still now they're not following that rule. They said that we have this number of cases, then they have given us their rule. Recently in the new year in some of the city we have the curfew, but it is not like that in Odisha it is curfew. अदर जो स्टेट में है वो वहाँ पर कर्फ्यू नहीं था, कुछ अलग सा जो स्पेसिफिक दिल्ली हो गया, नाउ इन ओडिशा द कर्फ्यू इज डिक्लेयर्ड. बट इफ यू टॉकिंग अबाउट इन द West Bengal there is no curfew. That means what? Central government has not declared. It is not belongs to that. Means the decision about this lockdown and shutdown is taken by the central government, but central government has not defined. But on the situation or based upon the situation, state government has declared it. So that is called as the custom exception. मतलब कुछ exception ऐसा होता है so that doesn't belong to the exception dictionary, but according to our application requirement we have to define this throw keyword, throw the new exception. Get message method, understood this one? Custom exception in doubt? Ankita? No, sir. Then get message method, it is used for the string type all exception class inherit from the throwable. As you know that in earlier in Java, all errors and exception it comes from the throwable class. वो throwable class से आता है. Throwable is the predefined class from which all exception and errors are defined. It is used for the string type. All exception class inherit from the throwable. It returns a string that is stored in the exception constructor. So, which means what? I will describe it. When you define the exception, like here I define try.
Okay, so first we define try, then we define catch. Suppose here I define arithmetic exception E. Okay, so if you write only system.out.println, then if you print this object, so it is showing you what is the actual cause of exception. So it is showing you the arithmetic exception is happening. If you write here catch arithmetic exception E and write system.out.println E, then it is defined और ये आपको शो करेगा arithmetic exception is arises. Okay, we are writing this code in the backend. ये कोडिंग हम बैकएंड में लिखेंगे. अगर ऐसा कोई एक्सेप्शन आता है यूजर को आपको शो करेगा arithmetic exception arises. Then the user cannot understand what is that arithmetic exception. We know as a programmer, as a learner, as we know the Java, we know that if any kind of arithmetical error will happen, this exception will come. Then how come the user will understand what is arithmetic exception? So for that reason, we are use here e.getMessage. If I write here e.getMessage method, it is return you for which declaration. आप ऐसा कौन सा काम किए हो और पर्टिकुलर किसके लिए वो एक्सेप्शन आता है. It is not defining you arithmetic exception. It's showing you exception arises. Suppose line number 4. A user can understand it. So I did some kind of thing here, or exception arises due to your invalid PIN if the user is giving invalid PIN number. So that kind of message you can pass here. And if you not write this e.getMessage and only you have to pass E here, then it is showing you that part. Okay, arithmetic exception is happened. And instead of writing this one, इसको नहीं लिखकर भी आप और कुछ भी लिख सकते हो. मतलब आप खुद का मैसेज भी यहाँ पर पास